guys, this is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. So guys, from today onwards, we are going to initiate our 120 rules of grammar series. And in this series, on everyday basis, I'll be telling you one grammatical concept which you can apply in your grammatical topics like error spotting, phrase replacement and other kind of grammatical topics which are being asked in your competitive English exams. So it will be really very helpful for you all people. And guys, after watching the entire video, you need to let me know the examples of these applications so that you all can learn and apply it logically and in your spoken English as well. So guys, the very first concept is difference between each and every. Where you use each, where you use every. See, the very first common thing between each and every is both acts like an adjective in a statement because they qualify some noun. For example, I can say, and both the terms always used in a singular form along with singular noun and singular verb. For example, each plus singular noun plus singular verb, also with every plus singular noun plus singular verb. This is the condition. For example, I can say each student in the class is brilliant, like this. So here in this example, each student is a noun and this noun is qualifying the adjective each. So each is an adjective form. I can also say every student in the class is brilliant. In this example also, every is acting like an adjective, and this adjective is qualifying the noun student, right? So that's the sense. Here in both examples you can see I have used a singular noun and a singular verb with both the adjective forms each and every. Now let's know the Hindi sense of this. Each का मतलब होता है हर एक की हम बात करते हैं, हर एक विशेष रूप से. That's called each. Every का यूज कब करते हैं? जब किसी एक साधारण इंडिविजुअल एक ग्रुप की बात होती है, कलेक्शन की बात होती है, जो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, तो उसके लिए एवरी लगाते हैं. और गाइज ईच के साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन भी यूज करते हैं. ईच को हम प्रोनाउन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन से ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज ब्रिलियंट, लाइक दिस. सो अब यहाँ पे हर बच्चों में हर एक बच्चा, विद्यार्थियों में हर एक विद्यार्थी क्या है? इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ऐसा हम कह रहे हैं. तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखिए एग्जाम्पल में, तो ईच ऑफ द के सेंस में जब हम लिख रहे हैं तो हियर ईच इज नॉट एन एडजेक्टिव फॉर्म. यहाँ पे ईच आपका प्रोनाउन है जो कि नाउन के रिप्लेसमेंट में सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया हुआ है हमने, ठीक है. और गाइज अगर हम बात एवरी, तो ईच तो आपका एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज होता है, प्रोनाउन फॉर्म में भी यूज होता है. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट दिस टर्म एवरी, तो एवरी को सिर्फ हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं. वी नेवर यूज इट इन pronoun form. Like for example, if I'm saying every student in the class is brilliant and hardworking, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो every मतलब हर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है. तो इसलिए हमने एक जनरलाइज्ड अप्रोच के लिए every student का यूज किया. तो यहाँ पे every जो है that is acting like a adjective form and we can't say, हम ऐसा नहीं कह सकते every of the students. We can say each of the students but we can't say every of the students. So guys, this is the overall application of and the bifurcation between each and every. If you really like this video, guys, do not forget to like and share this video, and also do let me know in the comment section of this video some more examples, cite some more examples of the difference between each and every, so that you all can understand and apply it in your grammatical questions and in your spoken English as well. Thank you everyone. See you all in another video.